صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام دنیا کے دو طریقے سے بنتے، دو طریقے سے کام نکلتے۔ پہلا طریقہ اجرت دے کر، دوسرا طریقہ محبت سے۔ یا تو آدمی محبت میں کوئی کام کرے گا، کسی کی محبت پانے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، یا اجرت لے کر کام کرے گا، اپنے نفع کے لیے کام کرے گا۔ یہ دو طریقے سے دنیا میں کام چلتے۔ ہاں بول جو بول تینوں بھی کر سکتے ہیں، سیکریفائس بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کر In this world, people fulfill their task by two means. One, they are fulfilling task by giving some, what we can say, reward of with respect to money or with respect to anything which is used in this world. Second thing, of task can be fulfilled with love or affection. Person fulfill the task to make somebody please. So these are the two ways in which the task can be fulfilled in this world, by giving something with respect to worldly needs, or by with the love and affection. ایک تاجر جب دوسرے ملک جاتا ہے تو اپنے نفع کے لیے جاتا ہے۔ اس ملک میں اس کو جو ریسیو کریں گے وہ اپنے نفع کے لیے اس سے ریسیو کریں گے، اس سے محبت کریں گے، محبت کی باتیں کریں گے۔ یہ ملک والے کا بھی نفع ہے، وہ ملک والے کا بھی نفع ہے۔ نفع نہ ہو دونوں کے بیچ میں تو ان کا تعلق کٹ ہو جائے گا، کیونکہ یہ کام پیسے کے لیے کیے جاتے ہیں اور یہ کام جو ہے غرض کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ If a trader visits another country, then he is visiting to the neighboring country or other country for the purpose of getting money. The people who will receive for a business relation, they will receive that trader in their country for purpose of money. So there, if this transaction is not going on without money, then nobody will receive anybody, nobody will visit anybody. So this visit and this receiving is for a purpose of getting the wealth, purpose of money. This is their target of doing the transaction. ان دونوں کے درمیان بنیادی نقطہ ہے فائدہ اور نفع حاصل کرنا، مال و دولت حاصل کرنا۔ مزدور کام کرتے ہیں پیسے کے لیے اور ملازم کام کرتے ہیں پیسے کے لیے، تجارتیں ہوتی ہیں پیسے کے لیے۔ دنیا میں اگر کسی کا کوئی کام کر رہا ہے بولے تو وہ پیسے کے لیے۔ The two-sided people, okay, two countries or two persons, a dog is there. So the two persons or two countries getting connected for a purpose of wealth, purpose of money. Okay, a person doing any work on the basis of wages, on the basis of it, on the basis of salary. A trader does the transaction or deals with the customer on the basis of money. So they are having the relations, or they are doing the transaction, maintaining the relation on the purpose of wealth, on the purpose of wages, on the purpose of getting some worldly means. اب دوسرا ہے محبت کے لیے کرنا۔ امیر صاحب بیچارے ویسٹ گوداوری کے ہیں، تمہارے لیے خدمت کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی اجرت نہیں ہے۔ امیر صاحب کی بات تم مان رہے ہو، تم آسٹریلیا سے آئے ہو، تمہارے لیے کوئی اجرت نہیں ہے، یہ کام صرف محبت کے لیے ہو رہی ہے۔ کرنول والے تم سے محبت کرتے ہیں، تم کرنول والوں کے لیے دعا کرتے ہو، اور وہ بھی تہجد میں۔ یہ تمہیں کچھ نہیں دیتے، تم ان کو کچھ نہیں دیتے، یہ کام محبت میں چل رہے ہیں۔ ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے، محبت میں آئے۔ آپ ہم کو چاہ رہے ہو کہ بھئی آپ آسٹریلیا آؤ، بھئی ہم سے تو تمہیں کچھ نفع نہیں ہے، تو یہ تو صرف محبت ہے۔ یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے، یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے۔
The second thing, the second way of fulfilling the task is for the love of somebody, to please somebody, to get somebody's affection. Okay, you are in the Jamaat and Amir Sahib is doing khidmah for you. Amir Sahib is not getting any worldly return of that. You are obeying the Amir, you will not gain any worldly benefit, you will not get. You are only for the sake of pleasing somebody, pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. He is also serving you. You came in the Kardul people are serving you, you are a guest, then they are doing for affection, for pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. You are doing dua for them, especially in tahajjud, that is also for pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. For this, you are not getting wages, not getting the return, not getting salary for it. Okay? He came and to meet us, he is coming to meet us and having a majlis over here for pleasing us, for pleasing Allah, get an affection. We are calling him for Australia. You come for the Australia when you will go in for third year, then that is only for, you are calling him to please, to get affection. You are not getting any benefit, you are not giving any benefit. Neither you can give Amir Sahib and Amir Sahib can give worldly benefit. As for he, although he can give, but it is not for that purpose we didn't think. But there is no translation. So what am I, there is translation. माशाअल्लाह. और ये जो मोहब्बत है क़यामत में तोली जाएगी, मीज़ान में ये मोहब्बत भी रखी जाएगी, ये मीज़ान में रखी जाएगी और उसका बहुत वज़न होगा. अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो मोहब्बतें होंगी, ये मोहब्बतें क़यामत के दिन हमें एक दूसरे की सिफारिश पर और अपनी नजात पर हमारे लिए काम करेगी. On the day of judgment, this affection will be weighed, like the things getting weighed on the weigh scale. That this affection will also be weighed on the day of judgment. And this meeting for sake of Allah will be giving you for, we will getting najat for this one. And दूसरे क्या बोले? एक तो नजात है, दूसरा सिफारिश है. सिफारिश. He will be doing सिफारिश. सिफारिश बोल के ना मेरे साथ? Any special word for सिफारिश? No? Intercession. Intercession. I forgot. Intercession made mention Muntaka. Intercession will be. You will be doing intercession for us. We will be doing intercession for you. And the second thing is najat. It is a sabab. It is a mean of getting najat, getting salvation, getting mean for salvation on the day of judgment. So this is precious. अब इसकी रोशनी में मैं आपको 3 बातें बताऊंगा और उसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करो. For the purpose of fulfilling this second task, I will tell you 3 things. Try to memorize it properly and understand it properly. फितरी तौर पर हर आदमी को अपने अहल से, अपने दोस्तों से मोहब्बत होती है. अपने दोस्तों से मोहब्बत होती है. इस मोहब्बत का सही तकाज़ा ये है कि हम उसको अल्लाह के दीन में उसको जारी करें, अल्लाह के दीन में जारी करें. जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा. तो कोई भी आदमी अपने बच्चे को आग में नहीं डालना चाहता, कोई भी आदमी अपनी बीवी को आग में ढकेलना नहीं चाहता. सताने वाली बीवी पर भी कभी ना कभी प्यार करता, कभी कभी मोहब्बत करता. तकलीफ़ देने वाले बच्चे को भी वो जो है बॉडी में कुएं में डालना नहीं चाहता, लेकिन अंदर दिल के किसी न किसी हिस्से में उसके लिए मोहब्बत होती है. तो जिस तरह से आदमी दीनी मोहब्बत पूरी दुनिया से बेगर्ज होकर करता है, तो इस तरह की मोहब्बत सबसे पहले अपने अहल वयाल से करे और उनको अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन पर चलाने की कोशिश करे. The first thing is that a person has inbuilt natural affection for his house members, family members, friends. Okay. Nobody wants to, even the person is getting troubled by the wife or his children. Okay. Still he don't want to put his wife in the fire. Okay. Although he is suffering, but still he thinks that he should not be put in fire. Anybody don't want to put his children put in well. Don't want that his children should go in well and die there.
Although he is getting some hardship from the children, but he don't want that children should have. But this love and affection is to please Allah subhanahu wa ta'ala. That we should make our form, our behavior such, or our intention, or our dawah, our nature, that we should have love for them for sake of Allah. How we can that is Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, you save qu anfusakum, you save yourself and your house members, your relatives from the fire of hell. So how we can save fire of hell? To explain them deen, to make them come in path of Allah subhanahu wa ta'ala. And it's our responsibility that deen should come in their life. Explain them, make deen come in their life, and make them come in path of Allah subhanahu wa ta'ala. Same should be with respect to friends also. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद हैं, छोटा सा तो घर है। अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक औरत आई और उसके गोद में एक बच्चा भी। तो बोली कि मैं भूख से हूँ, 2 दिन हो गए, मेरे लिए खाने के लिए कुछ दे दो। अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक रोटी दे दी उसको, या कुछ टुकड़ा दे दिया खाने के लिए। उसके 2 टुकड़े करे तो उसने एक अपने बच्चे को दिया, एक अपने पास रख लिया। हालांकि 2 दिन से भूखी थी अम्मी। तो फिर अम्मा जान आयशा से वो बात कर रही थी, तो वो बच्चा अपनी रोटी खा लिया। खा के माँ के हाथ में जो टुकड़ा था, फिर माँ के हाथ की तरफ ऐसा हाथ खींचा, तो माँ ने उसको खिला दिया। अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रोने लगे कि अरे तू क्या खाएगी, तेरी रोटी भी तो उस बच्चे को दे दी। बोले कि मेरा बच्चा खा लिया तो मेरा पेट भर गया जी। तो वो औरत बाहर चले गई। अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रो रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले आयशा, ये अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? या रसूलल्लाह हरगिज़ नहीं डाल सकती। बोले ये माँ तो एक माँ की मोहब्बत है, अल्लाह ताला 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत रखते, और अपने ईमान वाले बंदे को कैसे जहन्नम में डालेंगे। In one of the narration, Aisha radiallahu anha was with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They were in the house was too small, and during that woman came and begged something that we had been hungry from last 2 days and didn't have anything to eat. So Aisha radiallahu anha presented piece of chapati, bread, or whatever food they have, and the woman made the 2 pieces of the bread, and one she kept for herself, one she fed to the child which was with her. Then the child started eating and finished the half part of the bread. Then he was trying to get the next half part, which was with the mother. Then the woman also gave, the mother also gave the second part. And he ate. Then she asked that, what you will eat now, your part of the bread also. The child has eaten. He had eaten or she has eaten, it means I have eaten. Master, what is? By serving him or her, serving the child, suppose I have eaten. Then the woman went to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Aisha radiallahu anha was crying. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that, what do you think? Can this mother put her child in the fire, hellfire? In the fire? So he can't, she can't put the child in the fire. This is why Allah subhanahu wa ta'ala loves their servants and slaves 70 times. 70 times, 70 fold as compared to a mother. हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, उजरत के लिए नहीं करते, जैसे एक ताजिर दूसरे ताजिर के लिए करता है। हमारी अपने अहल अयाल से मोहब्बत फितरी है, इसका तकाजा है कि उनको दीन पर चलाने की मेहनत करें। A person is having a mercy and affection with his family members, children. He don't get any wages for having this affection, this love. But this affection and this love for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. It's inbuilt nature. But now it should be for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So what is sake of Allah subhanahu wa ta'ala? Make them learn deen and make them come in path of Allah subhanahu wa ta'ala.
اب دوسری چیز ہے پوری امت سے پوری انسانیت سے اللہ کے لیے محبت کریں. Out of the three advices, first advice finished, second advice, we should love the whole ummah, whole mankind, only for the sake of Allah subhanahu. اگر کوئی امت کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اے اللہ امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، اس وقت میں امت میں جتنے لوگ ہیں وہ اتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی. اللہ رب العزت اس داعی کے اس استیاب کی وجہ سے، اس داعی کے اس فکر، اس دعا کی وجہ سے اللہ اس سے عالمی سطح پر کام لیں گے. ہر صحابی کی نیت پورے عالم میں دین کو پہنچانے کی تھی، اللہ نے ان سے وہ تقاضے پورے فرمائے. اور ہم لوگوں کی نیت میں یہ فرق ہے، ہم صرف اپنی سہولت دیکھ کر نیت کرتے ہیں. ہم اپنی سہولت دیکھ کر اور لوگ جن کے ضرورت کا احساس کرتے ہیں. نہیں، بلکہ پوری امت کو دین پہنچانے کی، پوری امت کو ہدایت ملنے کی، پوری امت کو خیر پر آنے کی، جب تک ہم دعا نہیں کریں گے، جب تک ہم پوری امت سے محبت نہیں کریں گے، اللہ ہم سے وہ کام نہیں لیں گے اور جو کام لینا چاہیے اور جن کاموں کے لینے کا ہم پر حق ہے اللہ رب العزت کو، کیونکہ یہ امت محمد ہے اور یہ امت داعی ہے. We should love whole the ummah only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. If a person makes a dua supplication for a whole ummah to please Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will give you reward points equivalent to the number of persons present in the ummah. What is the difference between us and the Sahaba? That they were having love for whole mankind only for Allah subhanahu wa ta'ala. Unless and until we will not make our love for Allah subhanahu wa ta'ala whole ummah, then Allah subhanahu wa ta'ala will not accept us for the world, because this ummah is not for any specific, it's for whole world. Being the ummah, worldly ummah, being the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it's our duty. It's to love whole ummah for sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to ask hidayah for whole ummah from Allah subhanahu wa ta'ala. If we will not make our worry, Allah subhanahu wa ta'ala will not accept us for the worldly tasks. It's a ummah Muhammadiyah, it's da'i ummah, so we should be having worry to ask the hidayah for whole ummah, is to ask to remember the whole ummah in our dua. The last 4 or 5 lines more or less I translated in my way, I wasn't able to remember. مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے، مزدور کام کرنے والا یہ سوچتا ہے شام ہو جائے، ٹائم گزر جائے، مجھے مزدوری مل جائے گی. مالک کیا سوچتا ہے؟ جلدی کام پورا ہو جائے. جسے مسجد بنانے کا کام ہے، گھر بنانے کا کام ہے، مزدور کیا سوچتا ہے؟ بھئی دن گزر جائے، ٹائم پورا ہو جائے. اور مالک کیا سوچتا ہے؟ جلدی گھر ختم ہو جائے، جلدی گھر بن جائے. ہمارا ٹارگٹ وقت پورا کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے پوری امت کو ہدایت ملنا، پوری امت سے جہالت کو ختم ہونا، پوری امت کی بے دینی ختم ہونا. When a person is doing any task or a work for the purpose of salary or wages, then as soon as the evening time comes, he is ready for the return. Whatever mason or carpenter or painter, whatever a person doing on a salary basis, wage basis, he want to get the return as soon as evening comes. When a person who want to complete the work from any person, worker, he want to just get the task fulfilled. My work should be done as soon as possible. My time is done, gone, okay, I want my task to be get done anyhow. He is not worried about, I have paid the salary, now I want return. We are not here to complete our days, to complete the duration, is to complete the task. Whole ummah should get the hidayah, first task. What is it? The whole ummah, the jihalat, what did I say, knowledge of deen is not there in people's life. That should also come out from the ummah, and the ummah should get knowledge. And whole ummah should come on
deen. That is our, just to complete it is not task. To complete the task is actually our motto coming here, aim and motto. उम्मत से मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो, क्योंकि अम्बिया का निज़ाम है मा असअलुकुम अलैहि मिन अजर। कोई भी नबी उम्मत से कोई अजर नहीं चाहता। हम लोग भी उम्मत को अल्लाह और उसके रसूल की वजह से मोहब्बत करें और इनकी हिदायत की फ़िक्र में रहें। We are only working for Allah subhanahu wa ta'ala, for please Allah subhanahu wa ta'ala. Any prophet didn't came in this world to take return from the ummah. It's mentioned that Prophet used to say, Ma as'alukum alayhi min ajr. We are not asking anything in return. Ajr is in Arabic is any return. We are not want any return from you for doing this work. We also want to do this work only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is on that way and on that pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. We are doing the work. We don't want any return from anybody in this world. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नबी से पहले जिन अम्बिया को भेजा इलाका मुतय्यन करके, मूसा अलैहिस्सलाम इस इलाके के लिए, इलियास अलैहिस्सलाम इस इलाके के लिए, ज़करिया अलैहिस्सलाम इस इलाके के लिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस इलाके के लिए। लेकिन जब हमारे नबी को भेजा, हमारे नबी को पूरी उम्मत के लिए भेजा, हमारे नबी को पूरी उम्मत के लिए भेजा। और हमारे नबी पूरी उम्मत के लिए होने की वजह से ये रहमतुल लिल आलमीन है। तो हर सहाबी की नीयत पूरे आलम की थी, हर सहाबी की नीयत पूरे आलम की थी। और इसी तरह से हम लोगों को पूरे आलम से मोहब्बत भी रखना और हमारी नीयत पूरे आलम की रहना। This has skipped Sahabas. The Sahaba used to have the word, in this translation left, they used to have the love for whole ummah. That now this translation. Any prophet used to come, they come for the selected areas. He has given the 4 examples. Suppose Musa alayhi salatu wasalam, he came for the specific area. Ilyas alayhi salam, he came for the specific area. Zakaria alayhi salam, he came for the specific area. For the example of Ibrahim alayhi salam, he came for the specific area. But Rasulullah sallallahu alayhi wasallam came for the whole mankind, whole world. So his intention was to give hidayah for whole world. We are ummah of him, our intention to give hidayah whole world. Sahaba's intention is to give hidayah whole world. So our intention is to love the whole ummah, whole mankind, and that whole ummah should get the hidayah. That should be our intention. अब आखिरी और तीसरी बात, अपने आप से भी मोहब्बत करें, अपने आप से भी मोहब्बत करें। जी बोलो। The third advice out of the 3 is one should love oneself, one should love himself. We should also love ourselves. बकरी शेर से भागती है और रीछ आग से भागता है, और हर जानवर अपने आप को हलाकत में डालने से बचता है। और कोई भी तकलीफ़ देने वाली चीज़ होती है, जैसे मकड़ी है, उसे पहले मालूम होता है कि मेरी तरफ कोई जो है नुकसान आने वाला है। और छिपलक जो दीवारों पे होती है, उसका जो शिकार दीवार में लगा रहता है, जब ये आने लगे तो वो भाग जाता है, आने लगे तो भाग जाता है। यानी कि ये जो चीज़ है ना आग से बचाने की, अब जैसे कोई भी आदमी है ऐसा अपने पैर को आग में नहीं दे सकता। मालूम हो जाए इस रास्ते में चोर है तो कोई आदमी उस रास्ते को नहीं जा सकता। मालूम हो जाए अगर इसको लगने से मुझे फ़लाँ तरह की बीमारी आएगी तो उसके करीब नहीं जाएगा। ये चीज़ें तो जानवरों में भी हैं, और ये मोहब्बत की वजह से नहीं है, ये अपने आप से मोहब्बत की वजह से नहीं है। ये चीज़ें जानवरों के अंदर भी कॉमन है। We are saying that the animals also have
love for themselves, trying to save themselves from where they are getting the destruction or they are feeling the danger. He is giving the example of goat. Goat learns from the tiger. Okay. Or another example is giving about the spider, the makri. Okay. He also, if somebody tries to come near it, he also analyzes that some danger is there. And giving example of a lizard. If you go near the wall, the lizard also feels that something problem. Any animal, he is feeling any danger, he is able to analyze. One example is given reach. I think it's bear. It's bear. The bear. More or less, the order is changed. But the bear, he also tries to fear something. If he fears something, then he tries to keep himself away. If you should kill himself from the fire. Example was fire. Similarly, a person feels that any robber is there, is trying to steal our money. He will not go there. A person will not try to put himself in any hardships. He find any hardship. A person don't want to put his feet in the fire. Okay. So these things, getting away from the danger and keeping oneself or himself away from the danger is not a new thing. This is not for the sake of Allah. Everybody want to keep himself in dawah. This thing is present in animals also. This is not because of love of oneself. This is the natural thing, natural tendency to keep oneself from it. One should love oneself for sake of Allah. नहाना, कपड़े पहनना, घर बनाना, अच्छा खाना, ये सारी चीज़ें जानवरों के अंदर भी होती हैं. ये अपने आप से मोहब्बत करना नहीं है. अपने आप से मोहब्बत करना ये है अपने आप को अल्लाह के हुक्म पर लगाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर लगाना और अपनी जान को और अपने माल को अल्लाह के लिए लगाना. The thing is that we are maintaining cleanliness, having a shower, and the animals fulfill their needs. They fulfilling their needs is not for the sake of Allah, is that for their natural tendency. Okay. We want to love ourselves for the sake of Allah. That is, we want to obey our body to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. To obey our body on the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तीसरा क्या बोले? वही तो अल्लाह का हुक्म नबी के तरीके और अपने जान माल को अल्लाह के लिए we should लगाना. invest ourselves, our lives and our wealth for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the meaning of loving ourselves for sake of Allah. बैत अक़बा में हज के मौसम पर मदीना के 70 आदमी आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे और अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बाजू में हैं. बोले कि या रसूलल्लाह, आप हमारे पास हिजरत करके आ जाओ तो हम आपको साथ देंगे, हम आपसे मोहब्बत करेंगे. अच्छा, अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बोले क्या कह रहे हो, सोच के भी कह रहे हो? अगर तुम इनको ले गए तुम्हारे यहाँ, पूरी दुनिया की तलवारों का रुख तुम्हारी तरफ हो जाएगा. तुम्हारी बीवियाँ बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो वो सब लोग थोड़ा तवक्कुफ पर, अच्छा ऐसा भी है क्या? ओहो. फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोले या रसूलल्लाह, हम ऐसा कर दें, अगर हम इस तरह करने के लिए तैयार हो जाएं तो हमें क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह की रज़ा मिलेगी और जन्नत मिलेगी. Allah. There is an incident mentioned in history of Islam, Sirah. There is a Bayt Aqaba, and people, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was having a bet with them. Abbas radiallahu anhu was sitting beside him. Then they said that you come to our locality, we will accept you and for the dawah and all, for all work, all the deeds of dawah. Then Abbas radiallahu anhu said that you are saying this, your words, you know the consequence of this. The swords of all the people, all mankind, or all we can say Qabila, will be of you, will be towards you, and your wives will become widows, and your children will be fatherless. Then are you ready for that? Have you thought of that thing also? That's saying that okay, this should also be done by accepting you as for our help and dawah, for your help and dawah. That they started asking.
what we will get in return for this. We will help you, accept you for a work. What we will get? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, Allah will get pleased with you and you will get paradise. That was the return. تو میرے عزیزو، ہم اللہ کی محبت میں کرنے والے داعی ہیں ہم لوگ، اور ہم اللہ کی محبت لینا ہے، رسول اللہ کی محبت لینا ہے، اور اس لیے ہمیں پوری امت کے لیے محبت کر کے ان میں کام کرنا ہے، اور جس طرح سے صحابہ نے کام کیا، اس کے لیے تیار ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ. So we are in path of Allah Ta'ala to get the affection and love of Allah Subhanahu wa Ta'ala, to get the affection of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, and to get the affection of whole Ummah, and to love whole Ummah for sake of Allah Subhanahu wa Ta'ala. For that, to spend ourselves along with our wealth and our everything what we have. Are you all ready to serve the mankind? غزوہ موتہ میں جعفر رضی اللہ عنہ، جن کا لقب تیار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ شہید ہو جائیں گے. تو جس وقت میں کہ وہ کچھ 2 دن یا 3 دن کے فاقے کے بعد یا بھوک کے بعد کچھ کھانے لگ گئے تھے، بولے کہ بھئی پہلے امیر صاحب کا جو ہے شہادت ہو گئی، زید ابن حارثہ، ان کی شہادت ہو گئی، اب دوسرے امیر جو ہے انہوں کہاں ہیں؟ جی جعفر ابن ابی طالب. تو وہ جو گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے، او ہو میرا ساتھی شہید ہو کر جنت میں پہنچ گیا اور میں ابھی دنیا کے کھانے پینے میں لگی ہوں. تو اس گوشت کے ٹکڑے کو پھینک دیا. اللہ کی محبت میں جو اپنے پاس گھوڑا تھا اور اس کے پیر کاٹ دیے، واپسی کا خیال نہ آئے. جب کود پڑے لوگوں میں اور جھنڈا ہاتھ میں تھا، تو جھنڈا ہاتھ کاٹ دیا ایک جو ہے اللہ کے دشمن نے، اور جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، جھنڈے کو دونوں ہاتھوں کے اندر چمٹا لیا. تو یہ ایک اللہ کے دشمن نے پیچھے سے نیزہ مارا، وہ نیزہ باہر نکل کر ادھر کو گر گیا. لیکن اب بھی جھنڈا پکڑے ہوئے ہیں، جب تک زندگی ہے اللہ کے دین کے کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پھر ایک نے آ کر تلوار سے آپ رضی اللہ عنہ کے 2 ٹکڑے کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ جعفر شہید ہو گئے، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں فرشتوں کے ساتھ پر لگا کر اڑ رہے ہیں. اس طرح سے میرے عزیزو، ہر آدمی کو اپنی ذات سے، اپنے نفس سے جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کو اللہ کی محبت میں کرنے کے لیے راضی ہونا تھا. اس طرح تیار ہیں سب لوگ انشاءاللہ. There is an incident in Ghazwa Mu'tah, we are knowing it more or less. And it was when Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala, his incident, he has been called as Tayyar, and when he flies. Okay. So, it's an incident that when the first Amir, Zayd ibn Haritha, got martyred and accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, then the turn was of the Ja'far ibn Abi Talib, the next Amir. Okay, as the Rasulullah said, then he was having a piece of meat, because he had not eaten from 2 or 3 days, and he was supposed to have the meat so that he can get some capability to have a war. But as soon as the sound or people started saying that our first Amir is Shaheed and the martyr, where is our next Amir? Then he saw that, I had been called by the Muslims in times of need, and I am busy in worldly tasks, eating the piece of meat. So he threw the piece of meat. And secondly, he already, it's mentioned in the Sirah books that he already cut the legs of the horse, so that no thinking of going back. He was in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. One enemy having a spear in his hand, throw over the Ja'far ibn Abi Talib from back side. It got passed from his body, from the front, and he was not able to control himself. Then another enemy cut him into 2 pieces. But before that, this incident mentioned that
the war was going on and his hand was cut. That in which the flag was held, he was holding the flag of Muslim as a sign that Amir is there. Okay, we are not yet defeated yet. So he hold the flag in another hand. His hand or second hand was also cut. Now the hand is cut, but some part is left of the hand. Okay, the arms, this is hand, two arms, this is arm, this is hand. So between the parts of the arm, he just tied the flag and tried to attach with his chest so that the flag does not fall within his unless and until he is been martyred or when he is alive. So he didn't allow the deen to get suppressed when he is alive. So for we need also make the intention that till I am alive, I will inshallah submit myself for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for to please Allah, and loving myself for sake of Allah, to please Allah. So I will all ready for the spreading the deen all over the planet. तैयार हैं सब लोग इंशाअल्लाह, मेहनत करेंगे सब लोग, मौत तक करेंगे इंशाअल्लाह जी। मजबूत नियत करो जब यहाँ से जाओ करनूल से, और नियत लेकर पहुँचो कि इंशाअल्लाह पूरे आलम में करना है जी। तो अब ये तीनों चीज़ें समझ में आई। एक तो अपनी ज़ात से मोहब्बत करना, यानी कि अपने आप को दावत में लगाना, अपने अहल से मोहब्बत करना और अपने पूरे अहल को अल्लाह के हुक्मों पर जमाना। तीसरा, पूरी उम्मत से मोहब्बत करना और उनको जो है उनकी जहालत को दूर करके और सबको हिदायत पर लाने की फ़िक्र करना। ठीक है, अद्दावतु लिनफ्सिही वद्दावतु लिअहलिही वद्दावतु लिकुल्लिल उम्मा। और ये तीनों चीज़ों को अल्लाह की मोहब्बत के लिए करना, अजर के लिए नहीं करना। तैयार इंशाअल्लाह जी। You got the three advices. First, loving oneself is suppressing our lust for the sake of Allah Ta'ala on the deen, then giving dawah to family members, our relatives, and for the sake of Allah, bringing them towards the dawah, towards the deen, and loving the whole ummah for the sake of Allah Subhanahu wa Ta'ala, and removing the jahalat from them, make them learn the deen and come towards the Allah Subhanahu wa Ta'ala and come towards the deen. And this is doing only to please Allah Subhanahu wa Ta'ala, for the love of Allah Subhanahu wa Ta'ala, without expecting any return from them in this world. We will do inshallah all the work. Are you ready for submitting yourself for all these three tasks? शेख साद दामद बरकातुहू फरमाते Shall I ask? He said it. I do translate my new English. He said that you should make also dua for yourself, for house members, and for whom. शेख साद الدعوة لنفسه, الدعوة is not dua. कोई दुआ आपने बताए थे वो बोल रहे वो करने के लिए, कोई दुआ नहीं बताए ना? हाँ, वो दुआ पूरी उम्मत की हिदायत पर आने के लिए, जहल ख़त्म करके हिदायत पर आने के लिए। To make a dua for whole ummah so that the lack of knowledge of deen should vanish out and deen should come. They should come on the hidayah. That's dua. तो शेख साद दामद बरकातुहू फरमाते कि अगर कोई गर्ज़ के लिए, अगर कोई उजरत के लिए अगर इस काम को करेगा, अल्लाह ताला उसे जल्दी दूर कर देंगे और इस काम से हटा देंगे। इससे हमें बचना चाहिए अल्लाह की मोहब्बत के लिए, और मौत तक हमें इसको जम के रहना है इंशाअल्लाह। Sheikh Sir Hafizahullah, he is telling that one who is doing this task for some worldly need, Allah subhanahu wa ta'ala will make him divert from this path, or Allah subhanahu wa ta'ala will not accept him for forever. So we should do this task only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है इंशाअल्लाह। बारकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर वसन जी। मुख्तसर दुआ भी कर लें आप की मौजूदगी में, आपकी आमीन की बरकत से हमारी भी कुछ दुआएं कबूल हो जाएं जी। बोले You are all going in your localities. This from myself. Whenever now Jamaat came in our locality, we should be there for translation. Translation has two rights. Translation what is there. Don't try to include extra things.
And if try to translate the short sentences, see the people also to short notes so that you can transfer the whole. If you are forget by any human behavior, it's not on you, but translate as far as word to word. That is the loan of translation. There is a depth of translation to translate what is suited to translate. If you want to translate anything else, then you should say this is not of translation, I am saying from myself. This is a depth of translation. Dua, he is saying to do the dua inshallah. भाई आप लोगों की मौजूदगी में और आपके आमीन की बरकत से हमारी भी कुछ दुआएं कबूल हो जाएंगी, इसलिए सब मिलके दुआ कर लें. ये बोल दीजिए. देखिए, for sake of whole ummah, inshallah, you are also here, I am also here, then you should make inshallah dua for whole ummah, inshallah. It will be a benefit for us and for the others. Allahumma ighfir ummat Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma irham ummat Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ihfaz ummat Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan wasi'a, halalan tayyiba, wa amalan mutaqabbala, wa shifaan min kulli da. अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा. अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत की हर ज़रूरत का तो तकफ़ुल फरमा. अल्लाह हमें तेरी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा. अल्लाह तेरी सच्ची मोहब्बत के लिए अल्लाह हमें तेरे दीन का काम मौत तक करने की तौफ़ीक़ अता फरमा. हमें अपनी ज़ात को भी कबूल होने की तौफ़ीक़ अता फरमा. अपने अहल वयाल को और पूरी उम्मत को कबूल कराने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा. अल्लाह इस मेहनत में रहते हुए हमारे हिस्से की हिदायत हमें नसीब फरमा. अल्लाह इस इलाक़े की जो ज़रूरतें हैं मेरे मौला, तो अपने फ़ज़ल से उसको पूरी फरमा. जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, मौला उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुभान माशाअल्लाह. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. अल्लाह कबूल फरमाए. आप जाके कितने दिन में? 1 महीना तकरीबन. हम लोग जब आए थे तो आपसे मुलाकात हुई थी? नहीं, हम आए वो जा रहे थे. हाँ नहीं मुलाकात नहीं हो पाई. हमें सब 6 महीने तक माशाअल्लाह. अल्लाह कबूल फरमाए. 6 महीने तक पर सुभान अल्लाह. बहुत ज़रूरत है हज़रत के इलाक़े में भी, बहुत काम की ज़रूरत है माशाअल्लाह. और ऐसे लोग रहे तो आगे पीछे वालों का रास्ता खुलता. सामने वाले लोग सामने जाते रहे तो पीछे वालों के लिए रास्ता खुलता रहता. जी अल्लाह के फजल से. और मैं पहुंचा जो है तकाज़ा जमात के लिए बेतम शरला में झंडा मस्जिद के लिए गश्त शुरू हो गया. आप तक पहुंची बात है? हाँ. अभी ये 2-3 हफ्तों से झंडा मस्जिद में अल्लाह के फजल से गश्त मस्जिद में हुआ. पहले हमें बाहर करते थे घर में, अब मस्जिद में शुरू. जब आगे जाने वाले आगे जाते रहे तो पीछे हुए लोगों के लिए रास्ता खुलता रहता. माशाअल्लाह. आमीन या रब्बल आलमीन. बारकल्लाह. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. आमीन या रब्बल व अंत कज़ालिक. माशाअल्लाह तबारकल्लाह. ठीक है, अब हम चलते हैं मरकज़ के लिए. जी हम चलते हैं मरकज़ के लिए. आने वाला था. मैं जानना चाहिए था. मुझसे बोले नहीं कोई नहीं अमीर साहब. 3 घंटे माशाअल्लाह जाते. आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है. और वो भी कर्नूल में हो गई माशाअल्लाह. जमात में मुझे ज़रूरत है कि मैं नको जाऊँ, की ज़रूरत पड़ती है. नहीं हाँ नहीं अच्छा करें, कोई बात नहीं माशाअल्लाह. और मैं इंशाल्लाह जब यहाँ से अब एक हफ्ता कर्नूल के बारे में बात कर रहे थे ना, जी तभी मेरे को ऐसा उम्मीद थी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. अल्लाह कर्नूल में होगी. कर्नूल में होगी आपके कहने के मुताबिक. पानी निकाल बा उसमें. बॉक्स लेके हाँ बाक्स ले लो. वो कवरा निकाल के रखे. और सफ़र अच्छा रहा. हाँ आमिर साहब से बोलो वो थोड़े फ्रूट है मेरे साहब, आप इस्तेमाल करो जैसा चाहें. हाँ जी हाँ. मलावी
नहीं मलावी नहीं, लाइबेरिया, लाइबेरिया, सिर्रा और गिनी कोनाकरी। He also in Uganda. 2010 में था। माशाल्लाह, 9 में गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें 2009 में युगांडा गए थे। वही बोल रहे हैं। हाँ तो उमर उसमें माजिंगा था। हाँ जी उमर मजीद, हाँ वो बोले अभी हो गए। हम जिस इलाके में गए थे वो मसाका राकाई था, और कलीसिजो, कम्मेंगो, Yeah, ये सब इलाकों में गए थे हम लोग। तो वहाँ पर हुसैन मुस्तफ़ा, जुमा महमूद बोल के बड़े अच्छे ज़िम्मेदार थे। तो मरकज़ से अकाबिर का आना तय था और सफ़र कैंसिल हो गया था उनका, तो वो उस मुल्क का इज्तिमा संभालने के लिए हमारी जमात को बुलाए थे जी, मसाका से। तो उसके जो भी अहम बयान थे वो अल्लाह ताला ने हमारे ज़रिए से पूरे कराए थे। मस्जिद से कौन कौन साथ में? हमारे बेदम चल्ला के थे, चावल के थे, तो इनकी जमात से हाँ इनकी जमात अच्छा है। हमारी पूरी जमात थी माशाल्लाह, माशाल्लाह। वो लोग नहीं पहुँचे तो जमात को बुला लिया उन्होंने। अल्लाह अकबर। हम थे 400 किलोमीटर दूर में, तो वहाँ बोले कि हमारे इंडिया की कोई जमात है, उन्होंने कहा एक जमात है उसमें मुफ्ती साहब है। तो मेरा पहला बैरून था वो, उन्होंने कहा फिर उनको बुला लो बस जी। फजर की नमाज के बाद बयान शुरू करे थे और 11:30 बजे दुआ हुई थी, लगातार बयान, तकरीबन फजर 5 बजे होती है। सुनते भी वो बैठते आराम से, बोलते नहीं। कितने घंटे हुआ रहेगा वो? तकरीबन 6 घंटे के लगभग हो गया था जी, 6 साढ़े 6 घंटे लगातार। उसमें अलग अलग तय होते हैं या एक एक घंटा ऐसा आप जमात के साथ ही? ऐसा क्या भी नहीं, बस ये किच जी, सब लगातार हो गया था। और मुल्क वाले अलग अलग, तकरीबन 13 मुल्कों के लोग थे, वो तर्जुमे के लिए अलग अलग बैठे थे जी। तमाम बातें आना चाहिए। आपके लंबे में लंबे कितने घंटे की बात की? अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब वो जितना, तो जितना रहेगा सब निकालते हैं। वही मुख्तसर बयान करने का ही आदी हूँ जी। ज़्यादा लंबा बयान तो उसका था, और एक बयान तंजानिया का था। अच्छा। ये तंजानिया पिम्बा इज्तिमा के अंदर, तो उसमें भी थोड़ा लंबा बयान हुआ था, तकरीबन 4 घंटे। अच्छा, ये 2 काबिल ज़िक्र हैं। और हमारे इंडिया में तो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तो काम चलते रहते। खाली हजरत आए तो 3 के ऊपर जाता है। अभी हजरत के कुरान यूसुफ साहब भी कर रहे हैं अभी। हाँ 3.5 हाँ 3.5 4 3.5 4। तर्जुमा के साथ। मैं तकरीबन नहीं उर्दू के साथ, पूरा उर्दू हमारे। मुख्तसरी बात का आदी हूँ मैं, बहुत मुख्तसरी करता हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए और अमल की तौफीक। आमीन आमीन, दुआ फरमाइएगा। इंशाअल्लाह आमिर साहब, फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो आते। ज़रूर ज़रूर इंशाअल्लाह आमिर साहब जी। तुम्हारी लोकल जमात हम भेजते रहो इधर आमिर साहब। इंशाल्लाह अल्लाह ताला यार भेजेगा, क्या नसीब। और एक बेतम चल्ले को भी एक जमात भेजो। मैं बात करता हूँ। हाँ वेस्ट बंगाल में आपके नंदियाल के एक आलिम थे साथ में। अच्छा माशाल्लाह। जमा ले गया था। हाँ, हाँ। एक आलिम नंदियाल के थे। हाँ माशाल्लाह। माशाल्लाह, आप भी दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आमिर साहब, हाँ दुआ में आमीन या रब्बुल आलमीन।